Assalamu alaikum students. As you know, we have started the fourth chapter of gases, in which you have done the three of the topics, that is the general properties of the gases. Then you came to know about that of the introduction of kinetic molecular theory and then its main postulates, and then we have discussed the motion of the particles in the gas state, right? So you come to know that the gaseous state, that is the most random state, and the particles, they are largely apart from each other, and what to say, most of their properties depends upon the kinetic energy which they hold, and they can move in all directions, right? Now today we will learn about that of the absolute temperature, which is derived from that of the Charles law, and then we will go for the relationship between kinetic energy and temperature. There's a little derivation, and then we will come to know about that of the pressure and its units, and finally we will do the Boyle's law today, right? Now students, the topic is absolute temperature scale on the basis of Charles law. Charles law gives you a relationship between that of the volume and temperature of the gas. The simple definition of this law is that the volume of the given mass of the gas increases as the temperature increases, right? Which parameter you have to keep constant? That is pressure. The volume of the given mass of the gas increases or decreases with the increase or decrease of the temperature when the pressure is kept constant. Not only pressure, but the number of moles are also kept constant, right? This is a simple definition of the Charles law. It has another definition. Look at this. According to which the volume of the given mass of a gas increases or decreases by a factor of 1 upon 273 times of its original volume at 0 degree centigrades and reduces to 0 at minus 273.15 degrees centigrades and reduces to 0 at minus 273.15 degrees centigrade. The temperature of the gas does not remain in gaseous form actually, but it changes into the liquid or a solid form. Now what does it mean? Let me to explain it first. Look at this graph. In this graph, the temperature is given on the x-axis and the volume is given on the y-axis, right? Carefully look at this. We are decreasing the temperature of the gas. We are decreasing the temperature of the gas. इससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ, जरा उसको अपने माइंड में रखिएगा. We say a gas is enclosed in a container. It is having a movable piston along with it. The outermost atmosphere is having the pressure 1 atmosphere. Now what you are going to do, you are going to heat it. जब आपने उसको 1 डिग्री हीट किया, you find that the molecules or the particles of the gas, they acquired some of the kinetic energy. उनको मिली, उन्होंने थोड़ा सा जो है उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ी. एनर्जी बढ़ने से उनकी मूवमेंट इंक्रीज हुई. उस मूवमेंट ने एक्ट किया पिस्टन पे और पिस्टन ने मूव अप किया, ऊपर की तरफ को थोड़ा मूव हुआ. ठीक है, 1 डिग्री राइज. ठीक है, अच्छा आप यू डिड द सेम थिंग, एक और डिग्री आपने राइज किया, मजीद टेम्परेचर जो है आपने इंक्रीज किया. टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज हुई, फिर आपके पास में मूवमेंट किया पिस्टन ने अपवर्ड, राइट? अच्छा, अब नोटिस करें, यू आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर. अब आपने उसको रख लिया उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर में, सपोज करें आपने उसको रख दिया, या आपने उसको कोल्ड उसमें रख दिया एनवायरनमेंट में. व्हाट विल हैपन? कोल्डनेस क्या करेगी? कोल्डनेस विल डिक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड दैट कंटेनर. जब कोल्डनेस जो है टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, आप सपोज करें आपने 1 डिग्री डाउन किया टेम्परेचर, 1 डिग्री डाउन किया टेम्परेचर, तो आपके पास में कितना चेंज आया उसकी काइनेटिक एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स दे विल बिकम क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती चली जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो रही है. ठीक है, सोचें जरा, आप खुद भी सोचें इस बारे में. जब हम ठंड में जो है भागना दौड़ना टफ लगता है, या आप एक जगह बैठे हैं आपको ठंड लग रही होती है ना, तो यू आर फीलिंग कि आपके अंदर जो है वो
जा रही है, कोल्डनेस दैट इज इंक्रीजिंग, तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, राइट। सो सेम अप्लाई हियर ऑन द गैसेस। अब क्या होगा, जब आपने ऐसा कर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, ये तो हमें पता चल गया, फिनोमेना की समझ आ गई कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। वेदर यू आर डूइंग इट बाय 1 डिग्री राइज कर रहे हो या 1 डिग्री डाउन कर रहे हो, कितना फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो चॉल्स लॉ की न्यू डेफिनेशन है वो आपसे कहती है कि there is a factor of 1/273. 1/273 कहाँ से लिया गया है? It comes from another scale, एक और स्केल को लेकर ये वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। वो कहता है जो ओरिजिनल वॉल्यूम जो है अंदर उसका कंटेनर का, जो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है गैस पार्टिकल्स ने, अगर आपने 1 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर इस गैस का, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? जितना उसका वॉल्यूम ऑलरेडी था उसमें 1/273 ऐड कर दो, राइट। अच्छा, लेकिन आप तो डिक्रीज कर रहे हैं। अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर 1 डिग्री आपने डिक्रीज किया सपोज, तो वो कहता है जो ओरिजिनल वॉल्यूम था गैस पार्टिकल्स का, अब वो 1/273 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई भाई? बात आई आपके कि कैसे हम कहते हैं कि 1/273 आया कहाँ से है? नाउ दिस कम्स फ्रॉम एन अदर स्केल। वैसे तो हम ये कहते हैं टेम्परेचर्स को डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें आपके पास में डिग्री लगी हुई होती है, टेम्परेचर जो भी डिजिट आपके पास में आ रहा होता है, राइट। Kelvin scale was introduced by Kelvin, Lord Kelvin in 1824 and 1904 में, ठीक है। और उसने कहा कि इट इज मोर ज्यादा, ये जो एप्लीकेबल ज्यादा आपके पास में सक्सेसफुल वन मेजरिंग यूनिट्स हैं फॉर द गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, राइट। यहां से उसने टर्म लिया है एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर स्केल का। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, पहले तो इसको जरा देखें, ग्राफ देखें ध्यान से। इस ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जा रहा है, द टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप डायरेक्ट, ये तो क्लियर कट है क्योंकि आपके पास एक स्ट्रेट ग्राफ बन है, राइट। इट इज गोइंग टू टच दैट ऑफ द लाइन, द एक्स एक्सिस को ये टच करने जा रहा है, राइट। एट विच पॉइंट इट विल टच the graph, the lower one line or the x-axis, it is this temperature. It is mentioned here, it is given. It is this temperature, that is minus 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये कैलकुलेट करते चले जा रहे हो स्लोली ग्रेजुअली, आपके पास में टेम्परेचर होते होते इतना डिक्रीज हो गया कि वॉल्यूम ही आपके पास जीरो हो गया, क्योंकि इसने तो टच कर दिया ना लोअर लाइन को। तो यहाँ पे व्हाट इज प्रेजेंट हुआ है, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे जीरो है बेटे, वॉल्यूम तो इधर को ऊपर की तरफ को वाई एक्सिस की तरफ को राइज कर रहा था, ठीक है। सो दिस टेम्परेचर is actually the base of the Kelvin temperature, right? This is the first digit of the Kelvin scale. The factor 273 comes from this point, that is minus 273.15 degrees वो कह रहा है। तो इसको और डिग्री सेंटीग्रेड को रिलेट करो तो आपके पास में 273 Kelvin will be equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिलेशन आएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो, दिस पॉइंट, this temperature at which it will touch to that of the lower line or that of the x-axis, here we say temperature आपका ड्रॉप हो गया, बहुत डिग्रीज में आ गया क्योंकि माइनस साइन के साथ जा रहा है, और आपके पास में हम कहते हैं कि वो बिल्कुल आपके पास में मोशन ऑफ द पार्टिकल सीज्ड, it is the lowest possible temperature on the earth, it is the lowest possible temperature on the earth. So it is taken as absolute zero, where the movement of all particles will be ceased, right? This is called absolute temperature, and with respect to this temperature, that is minus 273.15, इसको लिया गया है the basic
of the Kelvin temperature scale, and it is the starting point of the scale, right? Now, what is the relation between Kelvin and degree centigrade? Here it is given, you have to find it by means of this formula. K, it shows Kelvin is equal to Celsius scale, that is C naught degree centigrade plus the factor of 273, right? This is what we say, it is the conversion factor कि आप डिग्री सेंटीग्रेड्स को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, और इसी को अगर आप इंटरचेंज कर लें तो यू कैन गेट केल्विन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिग्री सेंटीग्रेड, रीअरेंज करके इस फार्मूला. कैन यू डू दैट? ठीक है, और यही आपका इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है, इंटर कन्वर्जन्स. एक्चुअली whenever we are dealing with the gases, we are doing the numericals, and in all these numericals we are going to make use of the Kelvin scale instead of the degree centigrade or the Celsius scale, because it is more accurate. Otherwise the calculations will be wrong if we will do under the Celsius scale, right? So that's why it is important to know what is the Kelvin temperature scale and what value of degree centigrade is equal to what value of K, right? So you can find it by means of this formula, that K is equal to degree centigrade plus 273. This value that is you have got from this what you say graph, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल बाकी है अभी, लेकिन I will not going give you more at this moment. We will do it next when we will do the Charles law, right? वहाँ पे एक और टर्म आपके पास में आएगा. फिलहाल आप इतना याद रखें that minus 273.15 is considered as the absolute temperature where all the movement of the particles will cease. लेकिन उससे पहले that will convert into the other form, कोई और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो लिक्विड बन जाएगा, गैस बन जाएगा. ठीक है, कोई भी ऐसा हमारे पास नहीं है अर्थ पे, कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसी गैस नहीं है जो कि इस माइनस 273 पे बिल्कुल उसके पार्टिकल सीज हो जाएं और वॉल्यूम जीरो हो जाए, ऐसा नहीं है. बट दे विल बिकम, मोशन तो सीज हो जाएगी बट द पार्टिकल विल चेंज इट्स शेप, वो या तो लिक्विड में चला जाएगा या फिर वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, राइट? अब हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज द केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का इंटरचेंज, that we have to collect. Okay, now here you can find it. Some of the numericals are given. Convert the following Celsius temperatures to Kelvin temperatures. Now I think you can do it well by applying the formula that K is equal to degree centigrade plus 273, right? So when you have 0 degree centigrade, it will be equal to 273 kelvins. Is it? निकालें जरा, चेक करें, देखें, यही फॉर्मूला अप्लाई करते जाएं. यू कैन डू फॉर देम ऑल. आई होप मुझे इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज गिवन टेम्परेचर इन केल्विन, टी के का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू दिस इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस अप्लाई द फैक्टर 273, इट विल बी 141 टेम्परेचर इन केल्विन. अगर आप यहाँ टी नहीं भी लिखेंगे, इट डजंट मैटर, इट विल बी फाइन, इट विल बी ओके, right? So it will be 273 kelvins, whatever the degree centigrades you have, convert them. Okay, now this is how to convert the Celsius temperatures to Kelvin temperature. A number of examples are also given along with what you say, there are given the example number 4 and example 4.2 as well, that is given, that you have to do yourself. Is it? So just you have to do the reverse of the above one reaction. I hope you can do it well. I have given here only one, एक ही मैंने दिया है इसमें, 4.1 की example दी है, but you have to do the second one yourself. We will do it in class. Okay, now come on. Here we have the next one. This is another relationship between that of the temperature and the average kinetic energy of the particles in a gas. If you remember, अगर आपके पास में यहाँ पे एक पोस्टुलेट था अंडर द KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और वो आपके पास में कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अभी हमने कहा कि केल्विन स्केल में आपके पास में एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है, या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है पार्टिकल्स की विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर.
यही relationship we have to derive here by means of the ये एक equation. If you remember, हमने कहा था clauses equation is used here. This is the clauses equation. This one, it is a 3 marks question जो कि as such आपके पास में आ जाता है, that give the derivation related to that of the relationship between that of the temperature and average kinetic energy. They can also ask you that give a derivation or give a relationship between that of temperature and average kinetic energy. So you have to give this small derivation. Now look at this carefully. The equation is, you have to learn it well, this equation. PV is equal to 1/3 mnc bar square. It is called kinetic energy equation of gases, right? Now, what about the kinetic energy? Kinetic energy, if you remember, that is equal to half mc bar square. Instead of new v bar square, velocities की जगह यहाँ पे आपने mean square velocity लगाई है जनाब, right? Kinetic energy is equal to 1/2 mc bar square. अब आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी है, एंड यू हैव PV is equal to 1/3 mnc bar square. वो कहता है जो ऊपर वाली इक्वेशन है, that is PV is equal to 1/3 mnc bar square. इसको आप यूं करें, divide it by 2 and multiply by 2, means 2/2 का फैक्टर अप्लाई कर दें. Apply the factor of 2/2. ठीक है, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें. So what will happen? ये रहा, आपने जब ऐड किया इसमें 2/2, तो आपके पास इक्वेशन का टर्म कैसा आ गया? Look this, PV is equal to 1/3 mnc bar square. आपने कहा 2/3 n half mc bar square, आपने इसको साइड पे कर लिया, right? Now what do you think about? क्या half mc bar square is not equivalent to this half mc bar square of kinetic energy, is it? So equation 2 and equation 3, both of them are having 1/2 mc bar square in them. So instead of half mc bar square getting from equation number 2, we can put up here kinetic energy, is it? अब दूसरा काम करना है. N represents you the number of particles. Now convert them into Avogadro's number of particles. So the term will be changed. N will be converted into Na. Wherever Na is given, it means the Avogadro's number of particles. Now, how the equation changed? It is now PV is equal to 2/3 Na kinetic energy. Okay? Now come to the next one. Here we have another equation. This is called general gas equation. This you will do next onward, right? In the next one lecture. It is PV is equal to nRT. Now both are PV values, 2/3 NaKe and PV is equal to nRT. Both of them are the values of PV, that is pressure volume work, pressure volume multiplication, right? So if we consider the number of particles in it, that small n, it tells you the number of particles, that is only 1. So what will you say? जब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी, R की भी और T की भी. So what will be there? PV is equal to RT. Now merge the two equations here. Both of them are the values of PV, that is 2/3 Na kinetic energy is equal to RT. Here it is, right? Now अब जरा इसको चेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को. 3 को दूसरी साइड पे ले जाइए, क्रॉस में RT 3RT, it will be 2Na kinetic energy आ गया. और अगर आप खाली kinetic energy को यहीं रहने देते हैं तो फिर क्या आपके पास में आ जाता है? 3RT/2Na. इसको दूसरी साइड पे ले जाइए. अब just listen it very carefully. Avogadro's number of particles, that is fixed. R is a Rydberg constant. It is also fixed. इसकी value fixed है. It is a constant. और Avogadro's number of particles भी constant है. 3/2. इसको तो आप change कर ही नहीं सकते. ये तो अब ये भी constant है. इस पूरे factor को ले लिया गया है equivalent to K.
सिर्फ एक पैरामीटर इसमें वेरिएबल है, and that is T, right? So what is given? Kinetic energy comes to equal to, kinetic energy is equal to KT, और अगर हम K को ले लें as a proportionality constant, so it will be kinetic energy proportional to T. Here the relation derived, yes. Kinetic energy is directly related to the absolute temperature. If you will increase temperature, kinetic energy will increase, and if you will decrease temperature, kinetic energy will be decreased. Right? So this is what we say, that the relation between average kinetic energy of the mole particles of the gas and temperature has been derived. Right, Ji? Now, there comes some conclusions. Think about what type of the energy is responsible for the movement in different type of the particles, that is in liquid, in the gases, and in the solids. What do you think about? Three types of the movements we have done yesterday in the previous one lecture. Which ones? There were the three types of kinetic energies: vibrational, rotational, and translational. We say the most ordered form is of the solids and most disordered form is of the gases. So only one type of energy is present in solids, that is only vibrational energy, right? The liquids will have two energies, as there is some freedom of movement, although they have the random structure, so there is some freedom to move in the liquid state, while in gases the randomness is maximum, right? So all the, what you say, type of the energy will be present. अगर हम liquids solids के लिए कहें कि temperature कौन सी type of energy से relate कर रहा है, तो हम कहेंगे vibrational energy is related to that of temperature. ठीक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो एक्चुअली आप उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं. सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए टू टाइप्स ऑफ एनर्जी का मेजर होगा, लेकिन गैसेस के लिए देयर विल बी द मेजरमेंट ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज, राइट? जो टेम्परेचर आप अप्लाई करोगे वो इन सारी फॉर्म्स को, इन तीनों फॉर्म्स को जो है वो एनहांस करेगा या डिक्रीज करेगा. डन है जी? दिस इज ऑल अबाउट दैट ऑफ द this average kinetic energy relationship with that of the temperature, right? Now to the next one. Here we have the gas pressure in the light of the kinetic molecular theory. What do you think about? अब कल मैंने आपको एक पिक्चर्स के साथ में बताया था प्रेशर गैसेस का क्या होता है. What do you think about? चलें नॉर्मल जनरल टेम्परेचर, जनरल पे आ जाते हैं. आजकल कहते हैं बारिश होने वाली है क्योंकि बहुत हब्स हो रहा है. हब्स का ये क्या, व्हाट डज इट मीन्स? इससे नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो है 1 एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. नॉर्मल प्रेशर ऑफ द एयर इन द एनवायरनमेंट इज 1 एटमॉस्फेयर. जब हम कहते हैं हब्स हो रहा है तो इसका मतलब है प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर बढ़ा हुआ है एयर में. ठीक है, तो गैस पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी ब्रीदिंग में हमें जो है प्रॉब्लम हो रही होती, मतलब सांस नहीं आ रही. ये कह रहा हूँ कॉमनली ये बात की जा रही है, सांस नहीं आ रहा, इतनी हब्स हो रही है. ठीक है, तो अल्टीमेटली आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रेशर जो है दैट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द गैस पार्टिकल्स. कितने हैं एट दैट टाइम प्रेजेंट? हम कहते हैं हवा में जो ऑक्सीजन है दैट बिकम्स लो. लो होने का मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो गई तो उसका प्रेशर भी कम हो गया, राइट? दिस इज व्हाट वी से द प्रेशर इज. अब दूसरी बात कर लेते हैं, प्रेशर डेवलप कैसे होता है. इफ यू रिमेंबर कल हमने बात की थी, इफ यू हैव अ क्लोज कंटेनर इनसाइड इट देयर आर प्रेजेंट पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स they are moving as the gas particles, they are apart from each other and they don't have any attractive forces between them. So what will happen? They will collide with each other and with the walls of the container. The force with which they will attack to that of the other one atoms or the molecules or to that of the walls of the container per unit area, man, that will be termed as that of the pressure, right? So here it is given the description of kinetic molecular theory about pressure, according to which the gas molecules are in the constant random motion. As I told you, now this is, I'm just going to read it. They move in the straight line until they collide with one another molecule out with the walls of the container. The pressure of a gas in a container is due to the force
exerted by its molecules on the walls of the container. The average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the Kelvin temperature. वही बात आ गई जो अभी हमने पीछे की, ठीक है. प्रेशर इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. जितना उतना ही ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा जितनी ज्यादा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी. वो बैठेगा नहीं सुकून से, दैट विल मूव रैंडमली, इधर उधर 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 भागा भागा फिरेगा, ठीक है. तो प्रेशर विल बी इंक्रीज इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, right? So the average kinetic energy of the collision when a gas molecule collides with the walls of the container will not charge at constant temperature, will not change आएगा यहाँ पे, will not change at constant temperature. आप एक fixed temperature रखोगे तो उस पे जो उनकी मूवमेंट का एक लेवल है that will be retained, ठीक है जी. और इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, लुक एट दिस. ये जो डायग्राम छोटी सी दी हुई है आपके पास में, ये इसमें द पर्सन इज गोइंग टू फिल अप द gas in the tire of the cycle and you see that flat tire हो जाए तो फिर वो रोड पे मूव नहीं करता है easily. So what is done, उसके अंदर हम कहते हैं उसके अंदर गैस का प्रेशर कम हो गया. So ये आप जो प्रेसिंग वन ये यूज करते हो कम गैस को उसमें पुट अप करने के लिए, इससे आप उसके अंदर गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो और उससे क्या होता है, स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है. अदरवाइज अगर उसमें से प्रेशर रिलीज हो जाए तो फिर तो वो बिल्कुल यूं फ्लैट हो जाता है, राइट जी. सो दिस इज व्हाट द प्रेशर इज. ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, राइट. नाउ हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया and then pressure is equal to force per area that is given by F upon A. Now here we have the units. You have to remember with respect to that of the point of view of the paper that SI unit of pressure is Pascal. It is Pascal, right? And 1 Pascal is equal to the force in newtons per meter square length or area. It is termed as the 1 Pascal. और अगर हम इसको ले लें इक्वल टू किलोग्राम्स और उसके लिहाज से तो फिर ये इट इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. तो एक्चुअली 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन आपने जो फोर्स है वो आपने मेजर की, आप कहते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जो उसने फोर्स अप्लाई किया है, that one is termed as 1 Pascal. Now here the different one pressure units are being mentioned. You know very well the apparatus used for this purpose. It is a barometer. Here it is given a mercury barometer is shown here. मर्करी का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे रहता है और वो पर्टिकुलर लेवल 760 मिलीमीटर Hg है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टॉरिसेली, ठीक है, इन 1643 में. These are the different units of the pressure and these will be used for the interconversions during the what you say different one calculations. So ये आपको इनका relations याद करने हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से आपने याद कर लेना है. So this one is 76 centimeter Hg. Now all these are the equivalent one, right? 76 centimeter Hg is equal to 760 millimeter Hg. Get the change of the units. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है तो 760 मिलीमीटर Hg आ गया और ये इक्वल है 760 टोर के और इसको हम इक्वल कहते हैं, इट इज इक्वल टू 760 टोर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, राइट. और इसी को 1 एटमॉस्फेयर इज मेंशन्ड एज 1 ATM. ATM मींस एटमॉस्फेयर. व्हाट इज इट्स रिलेशन विद दैट ऑफ पास्कल? तो 1 एटमॉस्फेयर जो है लार्जर यूनिट है, इट इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल्स जो कि फर्दर इक्वल है, ये था किलो पास्कल्स. अब इसको कन्वर्ट करें इनटू पास्कल्स तो इट कम्स आउट एज 1.013 10 पावर 5 पास्कल्स. क्या किया है आपने, किलो पास्कल्स से पास्कल्स में लेकर आए हो, डिवाइड करेंगे 1000 से या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 10 पर 5 आपके पास आ गई वैल्यू, ठीक है जी. नाउ इट इज इक्वल टू, अब ये एक और यूनिट आ गई, PSI साई पाउंड्स पर स्क्वायर इंच 14.7. इसका मतलब है 1 एटमॉस्फेयर इतने किलो पास्कल के इक्विवेलेंट है, इतने पास्कल्स के इक्विवेलेंट है और इतने साई के इक्विवेलेंट. एक और यूनिट है इसकी, दैट इज कॉल्ड बार. वैसे तो नॉर्मली शायद आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी उसके लिए बता दिया मैंने. 1 बार इज इक्वल टू 1 10 पर 5 पास्कल्स या 0.987 एटमॉस्फेयर की इक्विवेलेंट है, राइट. और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 14.7 PSI.
दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये आपके पास में आ जाता है हाउ टू मेजर प्रेशर, व्हाट द यूनिट्स इट हैज, और इन यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन्स कैसे होंगी। अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है टोर में और आपकी रिक्वायरमेंट जो है न्यूमेरिकल में, सॉरी नॉट द टेम्परेचर बट द प्रेशर इज गिवन इन टोर, और यू वांट इट in the millimeter Hg, or you want to get it in the atmosphere or in Pascal. So how will you convert it? So you must remember these relations. Here it given the interconversion of the pressure in pascals, kilopascals, and that of temperature. Here it is mentioned that is 1 kilopascal is equal to 1000 pascals equivalent होता है, and 1000 pascals is equal to 1 kilopascals के equal होता है, और मुझे निकालना है 10 pascals के लिए, तो I have taken it out as 0.01 kilopascals. मैंने 10 pascals को kilopascals में convert करना था, ठीक है। और दूसरा मैंने इसको एटमॉस्फेयर में भी कन्वर्ट करना है। नाउ गेट द रिलेशन, लुक एट द सेकंड सॉल्यूशन। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल्स, 101325 pascals is equal to 1 atmosphere, and now convert it into by multiplying it. 1 upon 101325 multiplied by 10 is equal to 0.000098 atmospheres. This is how we will do conversions. Here it is given, checkpoint is given, or your self check is given. That is your classwork. After listening to the lecture, you have to complete that. Okay, on to the next one. Here it is given the Boyle's law. Boyle's law, I think you have done it before in the lower one classes as well, but let me to give some explanation for it as well. Now look at this diagram first. First one, 3 containers are there. Each one is holding the gas particles. Now the number of particles in each is same, right? The difference is we have placed different pressures on it. Volume अंदर आपके पास में, हाँ, गैस के पार्टिकल्स में जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है उसको जरूर देखें। इट इज हाईएस्ट वन जब आपके पास बाहर सिर्फ एक ही आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक अदद बार हमने रखा हुआ है या एक वेट रखा हुआ है, ठीक है। 1 atm प्रेशर है बाहर, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है। रिमेंबर इट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है और अब टेम्परेचर भी सेम है, 2 पैरामीटर सेम है, एक टेम्परेचर और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपने इसको रखा हुआ है जनाब, फिर आपने जो दूसरे वाले कंटेनर में प्रेशर आपने कर दिया डबल, आउटसाइड एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया आपने, अंदर देखें स्पेस कम हो गई पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो आपके पास में जो है बाहर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। जब आपने उसको 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, आपके पास वॉल्यूम भी 4 टाइम्स ही डिक्रीज में गया, तो क्या कहेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। आप कहेंगे अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा जो है वो डिक्रीज होगा पैरामीटर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। इसी का वाइस वर्सा कर लो, पीछे चले जाएं वापस की तरफ, राइट। नाउ इट गिव्स राइज अ लॉ, or it gives a relationship between that of the pressure and the volume of the given mass of the gas, and it is called Boyle's law. It was given by Robert Boyle in 1662, and then here it is given the relationship. You can write it like this. Before this, the statement is, for a fixed amount of a gas at constant temperature, the gas volume is inversely proportional to the gas pressure, right? So the pressure is directly proportional to the inverse of the volume at constant temperature and mass, right? P is equal to K upon V. Here it is, K is the constant, so this one will give you it is the proportionality constant. Another form, if we say अगर आपके पास पहले gases, first 2 containers को consider कर लें, this one and this one. Here it is volume 1 and here it is pressure 1. पहला एक्सपेरिमेंट, पहला वाला आपका ऑब्जर्वेशन ये था, जब आपने इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया एवरीथिंग चेंज। आपने प्रेशर इंक्रीज किया, इट इज P2, फिर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, इट इज V2, इज इट, ठीक है। और वॉल्यूम इसका डिक्रीज हुआ, सॉरी, उसी लिहाज से इट इज V2। फॉर दिस इट विल बी कंसिडर्ड, आपने फर्दर मजीद उसके ऊपर क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, फर्दर वैल्यू इसकी चेंज हो गई वॉल्यूम की,
So we will say it is P3 equal multiplied by V3, right? ये आपके पास में आ गया जनाब. Then we can say another form that PV is equal to K, जो ऊपर हमने इस फार्मूला से डिराइव किया. अकॉर्डिंग अब ये K की वैल्यू चलती आ रही है ना आपके पास में. PV is equal to K, K तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू विल बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर जितना प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम भी तो उसी के लिहाज से डिक्रीज हुआ है, राइट जी. सो PV is equal to K, अब P1 V1 is equal to P2 V2, राइट. कैसे आ गया? दोनों ही K की वैल्यूज हैं, राइट. So two gases को अगर आपने relate करना है, so we have to make use of this one. Okay. Now come to the next one. Here it is given the graphical presentation of the two. Now here pressure on the x-axis, y-axis, and the volume at the which one axis? It is the x-axis, right? You have to draw it. Here it is given the graph between pressure and volume at constant temperature is called isotherm. पहले आपने जो है at constant temperature आपने एक वैल्यू प्रेशर की ली, एक वैल्यू, अच्छा सपोज ये आपने जो वैल्यू ली है ये एक ही टेम्परेचर पे सारे आपने पॉइंट्स फाइंड आउट किए. अब आपने बाहर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गैस पार्टिकल्स का, अब एवरीथिंग हैज बीन चेंज. उसका जो वॉल्यूम था वो उसमें भी चेंज आएगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी चेंज, सो दैट अब नए टेम्परेचर पे दोबारा आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे. यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and P. Again you will get the same time, same type. ठीक है, फिर आप T3 के लिए कर लोगे. तो स्लोली ग्रेजुअली आप जिस भी टेम्परेचर पे लाओगे PV की वैल्यूज वेरी करेंगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एवरी टाइम विल बी डिफरेंट. ठीक है. सो ये जो आपके पास में वैल्यूज आ रही हैं, जो आपके पास में ग्राफ्स आ रहे हैं तीन हाइपरबोलिक वंस और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आ रहे हैं, यू कैन सी इनमें एक सिमिलैरिटी है. जो आपके पास में फॉर्मेशन है तीनों की दैट इज सेम, राइट. जो भी आपकी प्रेशर वॉल्यूम का जो लिंक है आपस में वो आपके पास में सेम जा रहा है, ऑल्दो ग्राफ इज मूविंग अवे फ्रॉम द, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे नए टेम्परेचर से तो एवरी टाइम प्रेशर और वॉल्यूम ऑलरेडी पहले से चेंज में होगा. अब आप उस चेंज प्रेशर पे फर्दर चेंजेस अप्लाई करोगे, राइट. और अगर हम 1/V और P में निकालें तो ये डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है आपको जनाब, राइट. टर्म वहाँ पे भी सेम है. T1 is जो T3 है दैट इज द हाईएस्ट वन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द, अब जो प्रोडक्ट्स आपके पास में आएंगी दैट विल बी द मतलब से इन द हाइपरबोलिक फॉर्म में आपके पास में आएगा जनाब. या आप कह लीजिए स्ट्रेट लाइन में यहाँ आपने P और V का रिलेशन उसने दिया है, यहाँ पे P और इनवर्स ऑफ V का रिलेशन दिया है. तो यू विल गेट, अगर इन्वर्स में लेके जाओगे तो डायरेक्ट रिलेशन क्या फाइंड आउट करेंगे, और अगर आप इसको डायरेक्ट लेके जाओगे P और V को तो फिर हाइपरबोलिक टाइप ऑफ पास में ग्राफ फॉर्म में आएगा. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर चेंज के साथ में काइनेटिक एनर्जी चेंज तो प्रेशर भी चेंज, वॉल्यूम भी चेंज. ठीक है. और अब जो आप एक्सपेरिमेंट नया करोगे अब उस टेम्परेचर को कांस्टेंट करके करोगे तो आपके पास एक लाइन उनमें से बनेगी, राइट. सो you can do it at different one temperatures with a different change pressures and volumes, right. Now here it is going to give you that the Boyle's law illustration है, ये एक GIF है regarding the Boyle's law. It is telling you यहाँ temperature आपने fix रखा हुआ है, ठीक है. pressure आप increase कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, decrease कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है. this one is being given. ये जो internal ये central one portion है, it is telling you कि अगर आप pressure increase कर रहे हो तो volume जो है वो आपके पास में डिक्रीज हो जाता है, और अगर प्रेशर कम करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. एंड हियर ऑन द साइड इज गिविंग यू द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड pressure. I hope you understand it well, right? And if still some queries left, so you can ask me in the class. Okay, Allah Hafiz.